ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वापर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहे वद्भिरव्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्मपि कर्माणि कुर्वाणि सिद्धिमवाप्स्यसि अध्यत्तप्यसक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तत्तः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यास अज्ञानध्यानानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागा गच्छान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यधा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रिय यो न हेष्टि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यसमे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जित तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन किञ्चित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्या अमृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय। ओम श्रीकृष्ण अर्पणं नमस्तु।